Hello friends and very good evening to all of you. You are watching the 80-day study plan for SBI Clerk. तो वैसे guys 16th of April एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट गाइज, जिस दिन परहैप्स ये फैसला हो जाने वाला है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है फाइनल रिजल्ट रिगार्डिंग आपका जो एसबीआई क्लर्क है उसके एग्जाम का। तो वो तारीख देखा जाए तो बहुत ही पास आती जा रही है। तो इसीलिए गाइज आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी रहिए, बिकॉज 16 अप्रैल में आप ज़्यादा दिन नहीं है, इट्स लेस देन 15 डेज एंड माय डियर फ्रेंड्स योर प्रिपरेशन शुड बी टू द मार्क, अप टू द मार्क, बिकॉज बहुत ही जल्द देखा जाए तो कब होने वाला है ये एग्जाम आपके एसबीआई क्लर्क का, वो डिक्लेयर होने वाला है। नाउ ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है या फिर मैथ्स वीक है या फिर रीजनिंग वीक है, बिकॉज देखा जाए जब अगर मान लेते हैं डेट आगे बढ़ सकती है या फिर टेंटेटिव दी गई थी तो क्या पता पैटर्न में भी कुछ चेंज आ जाए। तो पहले तो ये बोला था कि कट ऑफ देखा जाए तो इस बार नहीं होगी, बट क्या पता इस बार अगर कोर्ट ने यहां पर देखो मामला कोर्ट का हो चुका है और अगर ये मामला कोर्ट में है अभी लगा हुआ है तो क्या पता कुछ कट ऑफ वाला सिनेरियो वापस आ जाए। इसीलिए गाइस बिल्कुल भी रिलैक्स मत होइए, बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं लैक्सिटी मत शो करिए, प्रिपेयर करते रहिए, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए और Adda247 के साथ जुड़े रहिए। ओके गाइस, सो टुडे देखा जाए हम लोग यहां कुछ सवाल देखेंगे सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन या पैराफिलर्स को लेकर के। ठीक है गाइस, अब देखो आमतौर पे क्या होता है पीओ के लेवल पे जब हम बात करते हैं आपके पैराफिलर्स की तो वहां पर देखा जाए तो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बट यहां पर हम लोग एसबीआई क्लर्क प्री के लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें से हर क्वेश्चन को सही जवाब दे पाओगे। ओके गाइस, सो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं ये सेशन, मैं चाहूंगा आप यहां पर लिखे कमेंट सेक्शन में I can answer correctly. Come on my dear friends, I want you to show some motivation over here, show some inspiration over here. You simply have to type I can answer correctly. Come on guys, एकदम अपने जहन से, चाहे आप अंग्रेजी में वीक हो या फिर बहुत अच्छे नहीं हो, अपने जहन से अपने दिल से ये आवाज निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखिए I can answer correctly. All right, now let's take a look at question number 1 that we have here for you. Alright, so when something works well for us, we often blank space. अब यहां पर sentence कैसे complete करेंगे guys? What's the correct option for this particular question to complete it? Is it keep it to ourselves? Is it try to make it impossible? Is it sound that we are godly? Is it want to share it with others? Is it try to make it difficult? तो क्या होगा यहां पर आंसर? Your time starts now. You get 30 seconds. Hurry up my dear friends. Come on. Okay guys, 20 seconds left to answer now. Hurry up. Ten seconds. 5 seconds left. Hurry up. Okay, now, so when something works well for us, well, what exactly is the meaning of this question over here? Let's just say that we just tried something new and it actually went our way. It actually worked well for us. All right, so that's the point over here. That's the meaning over here. इस meaning क्या है स्टेटमेंट का? पहली बात तो हमको इससे समझने की जरूरत है। अब देखो मीनिंग यहां पर ये है कि हमने मान लेते हैं कुछ ट्राई किया और वो हमारे लिए अच्छा साबित हो गया, वो काम कर गया। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मीनिंग है। अब इस मीनिंग में आगे जोड़ते हुए आपको ऑप्शन चूज करना है। नाउ कंसिडरिंग द बेस मीनिंग वी हैव टू ऐड व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, व्हाट्स द ऑप्शन ओवर देयर। नाउ ऑप्शन ए मींस कीप इट टू आवरसेल्व्स। ऑलराइट, सो दैट मींस वी डू नॉट शेयर इट विद अदर पीपल। तो हम अगर मान लेते हैं कुछ ट्राई करते हैं और वो काम कर जाता है तो वो हम अपने तक रखें, किसी और के साथ शेयर नहीं करें। ऑलराइट, then option B is try to make it impossible. So if we try something new and it works for us, we should try to make it impossible so that it cannot be achieved. All right, तो अगर मान लेते हैं हमने कोई चीज ट्राई करी और हमारे लिए वो काम कर गया तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो इम्पॉसिबल बन जाए। क्या आपको लगता है ये सही ऑप्शन है? फिर देखो ऑप्शन सी आपके पास साउंड दैट वी आर गॉडली। सो व्हेनेवर वी ट्राई समथिंग न्यू एंड इट वर्क्स वी शुड मेक श्योर दैट we sound like a god, all right, so that we are god, that's why we can make things work. All right,
तो मान लेते हैं हमने कुछ नया ट्राई किया और वो काम करने लग गया, तो फिर हमें ये घोषणा कर देनी चाहिए कि भाई ऐसा है, हम लोग भगवान जैसे हैं, हम लोग जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। ऑलराइट, फिर देखो ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, or when something works well. So perhaps when something works well, we should share it with others as well. All right, तो we should not just keep it to ourselves. तो यहां पर देखो मतलब क्या है ऑप्शन डी का, कि अगर कोई चीज हमारे लिए काम करती है तो हमें वो चीज सबके साथ शेयर करनी चाहिए, सबके साथ बताना चाहिए उस चीज के बारे में। फिर देखो ऑप्शन ई में दिया है, if something works for us, we should try and make sure that it becomes difficult. All right, तो अगर मान लेते हैं कोई चीज हमारे लिए काम कर रही है तो हम पूरी कोशिश करके उसको और जो है मुश्किल बना दें या डिफिकल्ट बना दें। तो अब आप बताओ गाइस सही जवाब क्या है? वेल, आई थिंक मेनी ऑफ यू, ऑलराइट, सो स्पाइडरमैन, आई लाइक दैट नेम, सेज डी, तबस्सुम सेज डी, आकाशदीप सेज डी, धीरज सेज डी, छोटू सेज समथिंग आई डोंट नो. Okay, Naga Sitipalli got job. Okay, well, congrats to Naga Sitipalli. Then Hina Saini says D. Well, guys, the correct answer over here is, computer ji, kya hai sahi jawab? Well, it's option D. See, I explained to you all the meanings, all the options. So that is why, considering the meaning, option D, which means to share the success with others, would be the correct one over here. मैंने आपको सभी ऑप्शंस की मीनिंग समझाए थे और सभी ऑप्शन की मीनिंग समझते हुए जो सही जवाब होगा वो यही होगा कि अगर हम कोई भी चीज नहीं करें और वो काम करें तो उसको हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का स्कोर 1 on 1 हो गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव ओपनड योर अकाउंट्स टिल नाउ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 दैट वी हैव हियर फॉर यू। So question number 2 is right here, my dear friends. When science goes berserk, society loses its moorings, sanity begins to play truant, and well, option A is result in neglect of basic human values. Option B is moral decline sets in. Option C is further plays havoc with nature. Option D is the significant elements take shape. Option E, positive results begin to show. So what's the answer? You get 30 seconds. Time starts now. Hurry up, my friends. $20 seconds left, guys. Hurry up. Last 10 seconds, friends. Hurry up. Just 5 seconds left, friends. Hurry up. All right, now see, the question over here is this. Now see, we need to understand the meaning of this question first of all. When science goes berserk, society loses its mooring, sanity becomes to play truant. So see, the point over here is that science goes berserk when that means when science is not controlled properly. All right, when there's absolutely nothing to control science, then society loses its mooring. So perhaps society has no more moral values anymore, and sanity begins to play truant. And perhaps the logical thinking of people, the sane logical thinking of people which includes moral values, it becomes truant, means it's not available. Truant equals to not available or unavailable, all right, or it's not there something. All right, so when let's just say the meaning of the original statement is that when science becomes going berserk, becomes out of control, society has no more morals anymore, and the sanity of the people is not there anymore, then what can be the option? तो देखो भाई यहाँ पर मतलब जो है वो ये है, जब विज्ञान को कंट्रोल करने के लिए कोई भी कंट्रोलिंग पावर ना हो, साथ ही में सोसाइटी में कोई भी मॉरल वैल्यू ना बचे, और साथ ही में देखा जाए तो होशो हवास में हम ढंग से काम कर सके, ऐसी फीलिंग खत्म हो जाए, तो क्या सही ऑप्शन होगा? देखो ये आप आपको चूज करना है। ऑप्शन ए, मीनिंग ऑफ ऑप्शन ए इज रिजल्ट इन नेग्लेक्ट एंड बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। ऑलराइट, so perhaps the meaning of the option A is over here, basic human values get neglected, get ignored. तो option A ये है कि जो basic human values हैं उनको हर कोई नजरअंदाज कर देता है। Option B is moral decline sets in. So perhaps morally decline or reduction starts happening. तो perhaps देखा जाए जो moral values होती है किसी के अंदर भी, वो शिष्टाचार देखा जाए तो कम हो जाता है, ठीक है। Option C is further plays havoc with nature. All right. So it actually means it what do you say, it creates a lot of troubles even with nature, तो प्रकृति के साथ जो इनफैक्ट धरती माँ हम लोग की जो प्रकृति है
वो देखा जाए तो और भी उसके साथ और भी जो है हम बुरा करते हैं यहां पर। फिर देखिए ऑप्शन डी, द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स टेक शेप। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स also take a particular shape, all right, also comes to existence, all right, then option D is कि जो बहुत ही जरूरी तत्व हैं वो जो है आकार ले लेते हैं। then option E is positive results begin to show, so perhaps things become positive and results become positive and they start showing, all right, so तो मतलब अच्छे जो रिजल्ट्स होते हैं वो सामने आने लगते हैं। तो ये यहां पर देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या मीनिंग्स हैं। नाउ अभिषेक says option B, all right, well Abhishek already had said option B, Akashdeep says option B, Meena Rani Sahu says option B, Dinesh says option B, Utkarsh says option C। तो कोई कह रहे हैं सर क्यों, हैप्पी बर्थडे भी मेरा नहीं है आज भाई, आज मेरा बर्थडे नहीं है। और कोई क्यों कह रहा है भाई मैंने तो अभी आंसर आपको दिया ही नहीं, तो आप पहले से क्यों कह रहे हो। आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू द मीनिंग ऑफ द ऑप्शंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर देख लें। ऑलराइट, द मॉरल डिक्लाइन सेट्स इन। देखो ऑब्वियसली बात है, जब हम पहले ही आपको बता चुके हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या था, साइंस पे कोई लिमिट ना रहे। द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन वाज व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑन साइंस एट ऑल, व्हेन द सोसाइटी हैज नो मोर मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज खत्म, सैनिटी बिगिंस टू प्ले ट्रूएंट, सैनिटी इज नॉट देयर एनीमोर। जब लोगों की लॉजिकल थिंकिंग एकदम खत्म हो जाती है तो फिर फाइनली क्या होगा, मॉरल डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली द मोरालिटी ऑफ द पीपल विल स्टार्ट टू रिड्यूस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप all of you chose the same. So guys, till now we have answered the two questions that we had over here, the first two questions or the two first questions have been answered. I hope that all of you have liked the video till now. If you haven't, please do it. Now let's see question number 3 that we have here for you. Okay, so talks and negotiations to resolve the dispute have taken place from time to time, but any attempt, blank space. Now तो यहां पर देखा जाए तो आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। अब आपको चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए इज टू फोर्ज एन अग्रीमेंट was based on a report by the fact-finding committee. Option B is to reject the agreement was not formulated. Option C is at reaching a solution has proved abortive. Then option D is to acquire dark shades has been inconsequential. Then option E is to solve the problem requires further investigation. So guys, what's the correct answer? You get 30 seconds and your time starts now. Hurry up friends. To 20 seconds left now. Hurry up friends. Ten seconds, hurry up. Last 5 seconds, friends, hurry up. Try and get the answer. कोशिश करो भाई, आ जाएगा आंसर. Try. Come on people, try. Okay, now अब देखो मैं आपको सारे आंसर का मीनिंग बता दे रहा हूं, तभी हम लोग यहां आंसर चूज कर रहे हैं. ऑलराइट, सो सी सिंस यू गाइज वांटेड द मीनिंग ऑफ ऑल द ऑप्शंस, आई एम गिविंग यू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एंड ओनली देन वी आर गोइंग टू सी द आंसर. सो डोंट यू वरी अबाउट दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स इज टॉक्स एंड नेगोशिएशंस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट have taken place from time to time, but any attempt. Now the meaning over here of this particular question is that, see, there have been various, disagreements amongst peoples. So perhaps, talks and negotiations, all right, to resolve, to end disputes, to end any kind of disagreement have taken place from time to time again and again, but any attempt, but any try, perhaps, what do we add after that? तो देखिए यहां बात ये हो रही है कि विवाद को सुलझाने के लिए बार बार बातचीत और नेगोशिएशंस होते रहे हैं, लेकिन कोई भी जो प्रयास हुआ है, अब उसके आगे क्या है वो समझना पड़ेगा. नाउ ऑप्शन ए इज टू फोर्ज एन अग्रीमेंट वाज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी. ऑलराइट, सो परहैप्स to actually make a fake agreement was based on a report by the fact finding committee which had to find the facts in a particular matter. तो यानी कि एक नकली रिपोर्ट तैयार कर देना अग्रीमेंट के रिगार्डिंग, जो कि बेसिकली देखा जाए उस रिपोर्ट पे बेस्ड होगी जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के द्वारा तैयार करी गई थी.
फिर option B is to reject the agreement was not formulated. All right, that means to outrightly reject the fact that there was absolutely no agreement which was formulated. All right, तो मतलब किसी भी बात पर अगर आपसी सहमति हुई थी, अगर हम ये बोले तो हम बोले ऐसे कोई बात नहीं हुई थी जहां पर आपसी सहमति बन सके. Then option C is at reaching a solution as proved abortive. All right, so perhaps now this means the point over here is that at a particular point a solution of what do you say, एक मतलब solution निकल आए तो ऐसा नहीं हो पाया. So perhaps no way of the solution has been made or could be reached. That's the point in option C. Option D is to acquire dark shades has been inconsequential. So perhaps thinking that absolutely ignorant of the problem is absolutely not going to give you any results. तो अगर आप ये समझें कि मतलब एकदम प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दें तो उससे दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, उससे डिसएग्रीमेंट बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. Then option E is to solve the problem requires further investigation. So if you want to solve the issue, you will need to do more and more investigation. All right. So दैट मीन्स तो अगर आप चाहते हैं कि दिक्कत यहां सुलझे तो उसके लिए आपको और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. कुछ आंसर देख लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं यहां पर. अंशुल सेज ऑप्शन सी, आदित्य सेज ऑप्शन ई, उत्कर्ष सेज ऑप्शन सी अगेन. देन रिचा, यू नीड टू रीलोड, आई एम श्योर योर स्क्रीन विल बी क्लियर. Sapna says option C and Sweetie Sonu says option C as well. Well guys, let's see what's the correct answer now. Kamri ji, let's have the answer please. Okay, C. It's option C. ऑलराइट, तो मतलब बहुत कोशिश करी गई है समय समय से कि कोई सोल्यूशन निकल आए, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल पाया है. ऑलराइट, सो टाइम एंड अगेन ट्राई हैज बीन देयर दैट that we are able to get a correct answer, but we have not been able to get the correct answer. So that's why option C is the correct answer, and I hope all of you scored 3 on 3 for sure. And welcome to all those of you who joined us late. Now let's see question number 4. The next question please. So action is the glorious principle of life and the only one that saves man from. All right. So when you act on something, now that is the only principle that gives you lots of glory in life and perhaps the only one that saves a particular person from blank space. तो देखा जाए मतलब काम करते रहना जो है यही कर्म देखा जाए तो अकेला ऐसा उसूल होता है जिंदगी में जिससे कि हर किसी को बहुत मतलब बहुत अच्छे क्या बोलते हैं, हर किसी को बहुत नाम होता है. और देखा जाए तो ये अकेला काम है जिससे कि कोई इंसान बचा रहता है. किस चीज से, वो आपको यहां जज करना है. ऑप्शन ए इज द यूज ऑफ फैकल्टीज फिजिकल और मेंटल. ऑप्शन बी इज स्टैग्नेशन एंड अनहैप्पीनेस. ऑप्शन सी इज द सोरो ऑफ फेलो बीइंग्स. ऑप्शन डी इज द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ हैप्पीनेस. ऑप्शन ई इज द यूज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. नाउ व्हाट्स द आंसर? यू गेट 30 seconds. टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप फ्रेंड्स, कम ऑन. 20 seconds left, friends. Hurry up. Okay, last 10 seconds left. Hurry up, friends. Five seconds left to answer, guys. Hurry up. All right, now. So guys, we also need to, we understood the meaning of the statement over here. Now also, we need to understand the meaning of the options. Now, option A is the use of faculties, physical और mental. तो perhaps यहाँ पर faculties का कैसे प्रयोग किया जाए, चाहे वो physically तरीके से हो या फिर mental तरीके से हो. मेरे ख्याल से शायद ये facilities करना चाह रहे हैं, faculties गलती से हो गया है. तो सुविधाओं का इस्तेमाल physical form में या मानसिक form में. Alright, so perhaps to proper use only one that saves man from the use of faculties from in a mental way or a physical way, okay, या फिर is the only way, अकेला ऐसा तरीका है जिससे कि किसी भी इंसान, कोई भी इंसान जो है कर्म जब करेगा तो मतलब नाखुश नहीं रहेगा और जिंदगी में एक जगह फंसा नहीं रह जाएगा. So perhaps working is the only way that saves a man from from not getting stuck at one particular place and not providing him sorrow or making him sad. Now option C is कि perhaps काम करने से शायद जो है कोई भी इंसान अपने आसपास के जो लोग हैं उनका दुख जो है उन तक नहीं पहुंचता है. Now, so perhaps that's the point over here. So
that it means, that when you work constantly, then you are able to stay away from the sorrow and sadness of your fellow beings, of people who work around you or who are around you. Then option D is कि जब आप काम करते रहते हो तो आपको जो है मतलब खुशियों के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं वो उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है. सो परहैप्स द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड यू हैप्पीनेस आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू आर वर्किंग. ऑलराइट, देन ऑप्शन ई इज द यूज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. सो परहैप्स जब कोई इंसान काम करता है तो उसको अपने दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? So perhaps when you are working, then you do not need to use your intellectual capacity. Well guys, now we will see the answer, but before that let's just see your answers first of all. Okay, Arvind says option B, Pragya says option B, Rahul says option B, Pritika says option B, and Akashdeep Kumar says option B. I hope कि हर कोई यहाँ तुक्का नहीं मार रहा है, बिकॉज आई नो एटलीस्ट 40% पीपल तुक्का ही लोग मार रहे हैं. और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से लोग यहाँ पर तुक्का ही मार रहे हैं 40% लोग. तो बाकी लोग भी जवाब जो दे रहे हैं वो ऑनेस्टी के साथ ही दें, और 40% वाले भी ऑनेस्टी के साथ जवाब ही दें. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी अबाउट दैट. ओके, सो सी इट्स स्टैग्नेशन एंड अनहैप्पीनेस. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप काम नहीं करोगे लाइफ में, खाली बैठे रहोगे, तो ऑब्वियस है तो उससे आपको दुख होगा और जो है आप जिंदगी में एक जगह फंस से जाओगे. सो परहैप्स व्हेन यू डोंट वर्क देन यू गेट स्टक एट वन पर्टिकुलर प्लेस इन लाइफ, एंड दैट मींस दैट आल्सो गिव्स यू अनहैप्पीनेस. तो बोलते हैं ना, अगर काम नहीं है तो दिमाग खाली होगा, और अगर खाली दिमाग है तो वो दिमाग शैतान का होता है. So that's why, because an empty mind is a devil's laboratory, something like that. Now, let's see what's question number 5. But before we do that, I hope, my dear friends, all of you have liked the video. If you haven't, do like it right now. चलो अच्छा, अब question number 5 देखते हैं. Some of the banned substances for which Indian sports persons have been tested positive are so highly prized that. All right. So perhaps some of the banned substances for which for the consumption of which the Indian sports persons have been tested positive, they are extremely highly priced. They are not so easily available. That means, now let's understand more. Now you have to give the answer. By the way, you have to choose these options now and choose which of these options is the correct one. तो देखा जाए तो कुछ ऐसे substances या ऐसे drugs most probably जो कि इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जिसके लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा दामी है, और इतने दामी है कि कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको लगाना होगा. You get 30 seconds. Time starts now. Hurry up friends. अगर तुक्का नहीं लगा रहे तो अच्छी बात है. Now, so tell me guys, what's the answer over here? An empty mind is the devil's workshop. Yes, शायद ऐसा ही है, but कोई बात नहीं. From now on, it will become an empty mind is a devil's laboratory. तो guys, 20 सेकंड रह गए, बताओ जवाब क्या है. Hurry up, friends. Ten seconds left to answer. Hurry up. Five seconds left to answer, friends. Hurry up. Now, so option A over here is no ordinary sports person would be able to buy them on his own. तो perhaps जिन दवाओं की वजह से इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को बैन किया गया है, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, और कोई भी आम खिलाड़ी जो है उन दवाओं को नहीं खरीद पाएगा. So perhaps because some substances which actually got Indian sports persons banned, they are extremely high priced, and no ordinary sports person would be able to buy them. That's what's given in option A. Option B says, so perhaps, तो देखा जाए जिनकी वजह से बैन हुआ है, जिन सब्सटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा दामी है, और इतने दामी है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है आसानी से अपने आप से उनको खरीद सकता है. Alright, so the highly priced substances, in fact, what do you say? The exorbitantly priced substances which got the Indian sports persons ban, could be bought by any ordinary sports person very easily. अच्छा, then अब फिर देखा जाए तो जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा जिनकी दवाई वजह से बैन हुआ है, perhaps इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जिनके लिए पॉजिटिव किए हैं, उनके दाम इतना हाई है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन देखा जाए
तो उस पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको टेस्ट किया जा सकता है. सो ऑप्शन सी मीन्स मेनी स्पोर्ट्स पर्सन वर मेड टू टेस्ट दीज सब्सटेंसेस. देन ऑप्शन डी इज द कोचेस एनकरेज. तो परहैप्स जो कोचेस थे उन्होंने इनकरेज किया था इन प्लेयर्स को ताकि आप वो एक सब्सटेंसेस लें जिससे कि इन कोचेस को जो है द्रोणाचार्य के अवार्ड मिल जाए. ऑलराइट, सो परहैप्स द कोचेस ऑफ दीज प्लेयर्स encouraged them, egged them on to take these substances so that the coaches get the Dronacharya award. Then option E is sports person and the coaches unhesitatingly use them in search of glory. So perhaps जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, प्लेयर्स हैं और जो कोचेस हैं वो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिससे कि उन पे बैन हो सकता है ताकि जो है वो जीत जाए उस वक्त और उसमें जो है इतिहास रच दे. तो perhaps the sports person and their coaches unhesitatingly use these substances because they want to get glory right away. So anyway guys, so what do you think is the correct answer? And, okay, now Utkarsh says option A, Vishal says option A. Okay, पिल्लू नहीं बेटा, ऐसा कोई ड्रग एग्जाम के लिए नहीं है. सूरज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गाइस. देन विशाल ऑप्शन ए ऐसा कह रहे हैं. वेल, लेट्स सी व्हाट्स द एक्चुअली करेक्ट आंसर. लेट्स सी अबाउट दैट. इट इज ऑप्शन ए. देखो ऑब्वियसली चीज है, अगर कोई दवाई बहुत ज्यादा महंगी होगी या कोई भी सब्सटेंस बहुत ज्यादा महंगा होगा तो कोई भी देखा जाए तो कोई भी प्लेयर उसको आसानी से खरीद नहीं सकेगा. देखो अभी निशांत कह रहे हैं सर नेक्स्ट. देखो now I can actually increase the speed and go away right away, Nishant. See, but the point is, all of the students who are watching this, they are not as fast and as good as you are. So that is why we need to think upon each and every question like it has been explained to the weakest student in the class. All right, so that's why we take a good time and then we move on. Now let's see question number 6. That's there for us. Okay, so if the IT revolution is expected to generate incomes at a very high rate, then, well, the options are right here. So perhaps, तो अगर ऐसा लगता है आपको कि IT revolution से बहुत ही अच्छे तौर पर इनकम आ सकती है हर किसी की, तो फिर क्या यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ये चूज करना है. So perhaps, if the IT revolution, are expected to generate good income, then what should be here? So what do you say, my dear friends? Time starts now. Hurry up. You get 30 seconds, friends. Hurry up. So 20 seconds left to answer now. Hurry up, friends. Ten seconds left to answer, guys. What's the answer here? Come on. Okay, 5 seconds left, guys. Hurry up. Okay, now. तो देखो मैं ये बोलूँगा, देखो I understand that you guys हो सकता है कि you guys don't have much friends around you, so that's why when you come to a session, so then you guys talk to each other and have some fun. It's okay. तो बात करो, alright, if you want to chit chat, बात कर लो, but make sure that you are not interrupting the faculty or the other students when they are answering. Okay, so it's okay if you all guys want to talk amongst each other, but make sure that you are not interrupting anyone. Alright, now, so since IT revolution was expected, if IT revolution was expected to generate good incomes, then option A is the progress should be steady though slow. तो जो progress होना चाहिए, the progress should be really steady, constantly uniform, though it can be slow. Alright, तो progress जो है, जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, exactly वो लगातार होनी चाहिए, चाहे वो धीरे ही क्यों ना हो. Then option B is the willingness to do so will influence it. तो perhaps अगर बेसिकली ज़्यादा अच्छे इनकम पाने की इच्छा है तो उसकी वजह से देखा जाए तो असर पड़ेगा. ऑलराइट, नाउ सो परहैप्स दैट सी द पॉइंट ओवर हियर कि देखा जाए तो मतलब अगर दृढ़ता है, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर
काम को करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सच में आईटी रेवोल्यूशन ला करके जो इनकम है वो बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो परहैप्स इस काम से ऐसा हो सकता है। देन ऑप्शन सी ओवर हियर इज दैट द डिमांड शुड इंक्रीज, द डिमांड शुड इंक्रीज considerably. So perhaps, you know, the IT revolution, if the IT revolution is expected to increase incomes at a very high rate, then the demand for the same should increase considerably. तो अगर देखा जाए तो इनकम या पैसे बढ़ जाते हैं IT revolution से, तो परहैप्स देखा जाए तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जानी चाहिए। Then option D over here is expensive and arduous IT education packages must be introduced. So perhaps अगर IT revolution से इनकम बढ़ सकती है तो फिर एजुकेशन पैकेज जो होना चाहिए आईटी के लिए वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होने चाहिए और उनको लेके आना चाहिए। So perhaps if IT revolution can bring or generate high income, then perhaps we should also bring expensive and arduous IT education packages. All right, then option E over here is the initial investment requirement would be substantial. तो अगर IT revolution से जो है इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरत है, वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। So well guys, now let's see what's the correct answer, but before we do that, once again let's just take some answers over here. तो भाई बातें करो बट आंसर भी देते रहो, that's very important. So धीरज says option C, Agrima says option C, Pratika says option C, Utkarsh says option E. अच्छा भाई चलो अब देखते हैं सही जवाब क्या है. Let's see about that. So the correct answer is option E over here. The initial investment requirements would be substantial. तो obvious चीज है, देखो अगर आप आईटी रिवोल्यूशन से अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आईटी रिवोल्यूशन को लाने के लिए जो चीजें आप स्टार्टिंग में लेके आओगे जिसकी वजह से आईटी रिवोल्यूशन आए तो वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल होनी चाहिए. तो तुक्का मारने वालों की देखा जाए यहां पर बहुत बुरा हो चुका है उनके साथ. ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं कि तुक्का मारने वाले थोड़ा सा अब ट्राई करेंगे सही जवाब देने की. गुड जॉब उत्कर्ष एंड अदर्स लाइक मोनिका हु गेव द करेक्ट आंसर. तो तुक्का मारो, यही होगा तुम्हारे साथ. नाउ सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ई एंड आई होप कि आप लोगों का स्कोर 6 on 6 हो गया होगा. अगर ऐसा नहीं है तो आगे जाकर जरूर हो जाएगा. अगर आप मेहनत करेंगे तो तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा. और हाँ, वीडियो लाइक कर देना बिकॉज इतना ज्ञान मैं फ्री में नहीं देता हूं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. कम ऑन. So guys, question number 7 is right here for you, my dear friends. Now, blank space is one way of ensuring that the public knows you are there. So perhaps, you know, a particular action over here is a way of ensuring that public knows very well that you are प्रेजेंट ओवर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. तो देखा जाए तो एक ऐसे तरीके की बात हो रही है जिसे करके पब्लिक को यह जानकारी दी जा सकती है कि आप प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर जगह पे. तो अब ऑप्शन क्या है, सही जवाब क्या है, दैट यू हैव टू गिव. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप फ्रेंड्स, कम ऑन. Twenty seconds left to answer, friends. Hurry up. Okay, last 10 seconds left to answer, friends. Hurry up. Last 5 seconds, friends. Come on. What's the answer here? Okay, now, so perhaps it's time for us to get the answer now. Well, blank space is one way of ensuring that the public knows you are there. अब देखो ऑप्शन ए आपके सामने है, advocating for the blissfulness of ignorance. Okay, तो यानी कि देखा जाए बहुत ज़्यादा जो है अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक आपकी प्रेजेंस समझे या आपको जाने तो देखा जाए तो बेवकूफ़ी को बहुत अच्छे से आपको प्रमोट करना चाहिए. सो इफ़ यू वांट द पीपल टू नोटिस योर एग्जिस्टेंस, यू शुड डेफिनेटली प्रमोट इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी.
Well, that's option A. Option B is starting up controversies and making news. So if you want to gain publicity, starting up controversies, making controversies and making news is good. Okay, so we do have a Rakhi Sawant option over here. We'll not say it's option B, we'll say it's Rakhi Sawant option. So perhaps तो अगर आप चाहते हैं कि पब्लिसिटी आपको मिले तो आप कंट्रोवर्सीज पैदा कर सकते हैं, साथ ही में जो है उसमें न्यूज़ में भी रह सकते हैं, तो राखी सावंत वाला ऑप्शन है या ऑप्शन बी. देन ऑप्शन सी इज flooding the people with too much of inaccurate information. So perhaps if you want to be known well among the public, flood everybody with too much of inaccurate and wrong information. All right, so that's the point. So guys, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक आपका नाम जाने या आपकी पब्लिसिटी अच्छे से हो जाए, तो फिर देखा जाए तो हर तरफ आप जो है गलत जानकारी फैला दीजिए. Now, so perhaps if you want people to know your name, then perhaps you should take the most benefit from a particular deal. All right, so perhaps then so if you actually want publicity, then definitely try to take maximum benefit from a particular deal. तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत आपको लोग जाने, तो आप कोशिश ये करिए कि आप बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सके किसी भी पर्टिकुलर डील से. देन ऑप्शन ई इज, सो इफ यू वांट पीपल टू नो हु यू आर, यू शुड गिव अप योर वेल्थ. आई नो मेनी ऑफ यू विल से, सर वी डोंट हैव एनी वेल्थ टू गिव अप, एल्स वी वुड हैव डन द सेम. तो देखा जाए तो ऑप्शन ई है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, तो जो भी आपके पास संपत्ति है वो सब आप दान में दे दें. तो मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलेंगे सर जॉब तो है नहीं, आप संपत्ति की बात कर रहे हो. वेल गाइस, ये क्वेश्चन है तो दिल पे मत लेना. एनीवे, नाउ अच्छा आंसर देखें यहां पर. तो विकास कह रहे हैं राखी सावंत वाला ऑप्शन, प्रवीण भी कह रहे हैं राखी सावंत वाला ऑप्शन, आदित्य भी कह रहे हैं राखी सावंत वाला ऑप्शन, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं राखी सावंत एंड मिल्खा सिंह वाला ऑप्शन. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था. वंस अगेन तबस्सुम कह रही है राखी सावंत वाला ऑप्शन. सो एनीवे, लेट्स सी द करेक्ट आंसर. व्हाट्स द आंसर ओवर हियर? So yes, the correct answer is option B, Rakhi Sawant wala option, and perhaps it really took her to heights. Anyway guys, so I hope आप सभी लोगों ने 7 on 7 स्कोर पहुंचा लिया होगा अपना, और जो तुक्का मारने वाले होंगे वो अब तक नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेहनत करके आगे जरूर अपना स्कोर बढ़ा लेंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. So through poetry, blank space can be drawn towards the imperishable beauties of the universe with no cost and consternation. तो देखा जाए तो अगर आप जैसे बोलते कवि बन जाते हैं, अगर आप कवि बन जाएं तो आप पूरे ब्रह्मांड के सौंदर्य को जो है बिना पैसा लगाए फटाक से कहीं भी जो है लिख सकते हैं, या नोट डाउन कर सकते हैं, या नोट कर सकते हैं. तो perhaps संज्ञान ले सकते हैं पूरे ब्रह्मांड के सौंदर्य का. So perhaps if you become a poet, then through poetry you will be able to jot down the beauty of the entire universe without actually without incurring any cost at all, for free. So guys, anyway, what do you think is the correct answer for this particular question? Your time starts now. You get 30 seconds. Hurry up friends, come on. Pritika कह रही है सर राखी सावंत की जय. Well Pritika, I think in the previous elections Rakhi Sawant did form a party, and perhaps once again the elections are coming, and when she forms a party, you should definitely vote for her. At least she'll get one vote from you for sure. Come on guys, 20 seconds left to answer now. Ten seconds left to answer now. Hurry up friends, come on. Just 5 seconds left to answer guys. Hurry up, come on. Okay, now. So guys, मैं चाहूंगा अगर हम इस PPT को जरा full पे दिखा सके, can we do that please? Can we bring the PPT to the full? Be very good if you can do that. Thank you.
And we are back. Well guys, so perhaps some of the problems actually happened over here. देखो बात ये है, कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो है शायद पानी पीने लगे, लेकिन देखो ऐसा नहीं है. सी आज हमारे एक बहुत ही एसेंशियल टीम मेंबर का जो है यहाँ पर बर्थडे है, तो वो अभी केक खिलाने के लिए लाए थे यहाँ पर, लेकिन अब देखा जाए तो अभी हम लाइव शो के बीच में केक नहीं खा सकते हैं. तो एनीवे मैं चाहूंगा आप लोग लिखे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे निखिल Adda247. ओके गाइस, सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर, बहुत ही एसेंशियल एडिटर है वो. इनफैक्ट जो हमारे हिंदी एडिटोरियल आता है, जब भी वो आता है इनफैक्ट उसकी एडिटिंग वही करते हैं. ठीक है गाइस, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे निखिल Adda247. एनीवे नाउ ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये है ऑप्शन ए. इसमें पूछा गया था द अटेंशन ऑफ द लेथार्जिक एंड द इनर्ट. तो परहैप्स यू नो, तो देखा जाए तो जो अटेंशन है लेजी इंसान की, और जो एकदम भी अपनी बात बाहर नहीं कह पाता है, जो कि एकदम इंट्रोवर्ट होता है, उसकी बात. ऑलराइट, so that's the point. And option B is the entire gamut of human passions and pathos. तो जो भी रेंज है ह्यूमन पैशंस का देखा जाए तो वो यहां पर आ सकता है. देन ऑप्शन सी इज ऑल टाइप्स ऑफ रियल एंड इमेजिनेटिव लिटरेचर. तो देखा जाए तो जिस भी हर तरीके का जो असली और जो इमेजिनेटिव देखा जाए यहां पर जो रेंज है वो सब यहां कवर हो सकता है उसका. देन ऑप्शन डी इज द लेटेंट टैलेंट ऑफ राइटिंग. तो जो लिखने की जो टैलेंट होती है उसकी बात हो रही है. तो ऑप्शन ई इज द सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हिच थिंक्स इन अ नेगेटिव वे. तो देखा जाए तो जो सेक्शन है वो जो है एक गलत तरीके से जो सोसाइटी में आती है, तो उसकी बात हो रही है. एनीवे गाइस, सो perhaps we'll definitely have to take a look at the correct answer now, but before we do that, Akash D option B, Agrima option D, Spider-Man option C, Agrima once again, and Payal Sahu option C. So good job. Let's see what's the answer now. Can we have the correct answer now? All right. So it's option A, the attention of the lethargic and the inert. तो देखा जाए तो जो पोएट के जरिए, पोएट्री के जरिए पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य समेटना चाहते हैं बिना कुछ खर्च किए, तो वो असलियत में बहुत लेजी किस्म के होते हैं और अपनी बात खुल के नहीं कह पाते हैं. ऐसा आंसर में लगा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 दैट वी हैव हियर. सो आई होप गाइस, इस क्वेश्चन से पढ़ने के पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा. अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिए. ना ऑप्शन 9 इज व्हेन ट्राइंग टाइम्स कम blank space from those who have struggled and subdued the defiant destiny. तो अब आप बताओ गाइस, यहां पर तो जब मुश्किल समय आता है तो उस टाइम पे वो लोग जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं और परहैप्स देखा जाए स्ट्रगल करते करते उन्होंने जो है अपनी तकदीर को बदल के रख दिया है, यहां पर उनकी बात हो रही है. तो ऑप्शन आपके सामने है ए से लेकर सी तक. अब आप बताइए सही जवाब क्या होगा. यस जीतू, टुडेज सेशन इज अ लिटिल टफ. तो एनीवे गाइस, बताओ सही जवाब क्या है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू गेट 30 सेकंड्स. हरी अप फ्रेंड्स, कम ऑन. So 20 seconds left to answer now. Hurry up, friends. Last 10 seconds left to answer. 5 seconds left now. Hurry up, friends. Come on. ओके सो वेल, देखो भाई बात यह है कि आज तो मैं लाया था आपके लिए काफी सवाल, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यही सवाल हम लोग आज लास्ट ले लेते हैं. बट एनीवे, सो व्हेन ट्राइंग टाइम कम्स ब्लैंक स्पेस फ्रॉम दोज हु हैव स्ट्रगल्ड एंड सबड्यूड द डिफाइंट डेस्टिनी. तो देखो भाई ऑप्शन ए है वन शुड लर्न अ लेसन. ऑप्शन बी है वन शुड टेक एन एग्जाम्पल. ऑप्शन सी है वन शुड गेट एन इंस्पिरेशन. ऑप्शन डी है वन शुड परसिवियर एंड प्लॉड. ऑप्शन ई है वन शुड बी grateful. So guys, what is the correct answer? Can we have the correct answer please? Well, it's option C, one should get the inspiration. तो obvious सी बात है, जो ऐसे लोग होते हैं जो कि मुश्किल हालात की वजह से मतलब फेस करते हुए भी तकदीर को बदल देते हैं, तो उनसे हर किसी को इंस्पायर होना चाहिए और हिम्मत लेनी चाहिए. तो इसलिए देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड दैट विल बी ऑल माय डियर फ्रेंड्स. तो लेट्स रिमूव द पीपीटी राइट नाउ. सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज सेशन ऑफ Adda247. अब देखा जाए तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम के लिंक पे दे दूंगा ताकि जो बाकी के सवाल है वो भी आपको जरूर से मिल जाए. तो दैट वाज ऑल फ्रॉम मी एट Adda247 and the rest questions I will provide to you through the PDF at the Telegram channel of Adda247. So thank you guys. Peace out.